Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन. सो प्लीज़ वॉच माई फुल वीडियो. How many one-stop centers to provide legal medical support for Indian women to be set up across 9 countries by Ministry of Women and Child Development. One-stop center जो कि इंडियन वुमेन के लिए और 9 कंट्रीज़ के और वुमेन के लिए मिनिस्टर्स ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा वन स्टॉप सेंटर्स इस्टेब्लिश किया जाएगा. तो कितने किए जाएंगे? सो हेयर आर द ऑप्शंस 10, 12, 4, 14 and 9. So here the correct answer is option A, 10. The Ministry of Women and Child Development, Government of India announced that WCD in collaboration with the Ministry of External Affairs will set up 10 one-stop centers across 9 countries to support Indian women affected by violence in public or private spaces. Okay? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बताया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि WCD मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोलैबोरेट करके 10 वन स्टॉप सेंटर पूरे 9 देशों में इस्टेब्लिश करेगा, सेटअप करेगा, जो कि वुमेन को पब्लिक और प्राइवेट स्पेस में वायलेंस से बचाएगा. ओके, सपोर्ट करेगा. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च अ स्कीम टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू नीडी गर्ल्स एंड वुमेन्स अक्रॉस द स्टेट. किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक फ्री सैनिटरी नैपकिन्स जो कि नीडी गर्ल्स और वुमेन्स को दिया जाएगा, ये स्कीम लॉन्च किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज Punjab. The Punjab government on the occasion of International Menstrual Hygiene Day launched a scheme to provide free sanitary napkins to needy girls and women across the state. पंजाब की सरकार ने इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को एक स्कीम लॉन्च किया जिसके तहत फ्री सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे हर नीडी गर्ल्स और वुमेन्स को पूरे राज्य में. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state government announced the formation of a secretary level committee to develop guidelines and recommendations for the implementation of the smart kitchen scheme. स्मार्ट किचन स्कीम के लिए किस राज्य सरकार ने गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन लागू किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज केरल चीफ मिनिस्टर Pinarayi Vijayan announced the formation of a secretary-level committee to develop guidelines and recommendations for the implementation of the Smart Kitchen scheme in the state in order to meet LDF commitments. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अनाउंस किया है कि सेक्रेटरी लेवल कमेटी फॉर्म किया जाएगा जो कि गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन देगा स्मार्ट किचन स्कीम के लिए स्टेट में. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ सोलर बेस्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव फॉर रूरल हाउस होल्ड. गाँव में जितने भी घर हैं उन सब के लिए किस राज्य सरकार ने सोलर बेस्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस तमिलनाडु, गोवा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके, so in Goa, a big move towards the solar energy's adoption. Chief Minister Pramod Sawant has launched a solar-based rural electrification drive for rural household. गोवा के CM प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया है सोलर बेस्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री होस्टेड द 5th BRICS वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2021. किस कंट्री ने, किस देश ने होस्ट किया है 5th BRICS वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2021? सो हेयर आर द ऑप्शंस ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज बी. The 5th BRICS working group meeting discussed high performance computing and information communication technology.
फिफ्थ BRICS वर्किंग ग्रुप ने लॉन्च किया है HPC और ICT। So now next question, as per RBI the limits for foreign portfolio investors during the current fiscal in government in securities will remain unchanged at what %? RBI के अकॉर्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की करंट फिस्कल गवर्नमेंट में कैसे अनचेंज रही, कितने % अनचेंज रही? सो हेयर आर द ऑप्शंस 5%, 3%, 2%, 6%. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 6%. ओके. The Reserve Bank of India said that limits for foreign portfolio investor FPI investment during the current fiscal in government securities and state development loans will remain unchanged at 6% and 2% respectively of outstanding stocks of securities for 2021 and 22. So RBI ने FPI को बताया है कि 6% और 2% unchanged इसका डेवलपमेंट है लोन्स का. ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंपनी अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद टेक जायंट गूगल टू ऑफर अ लर्निंग सॉल्यूशन फॉर स्कूल्स. हाल ही में कौन सी कंपनी गूगल के साथ पार्टनरशिप कर रही है? ओके. और लर्निंग के लिए, लर्निंग सॉल्यूशन के लिए गूगल के साथ कौन सी कंपनी पार्टनरशिप कर रही है? सो हेयर आर द ऑप्शन बायजू, लर्नमी, अनअकैडमी, एस्पिरेंट्स. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज बायजूस. एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म बायजूस announced a partnership with tech giant Google to offer a learning solution for the schools. एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म बायजू ने अनाउंस किया है कि वो पार्टनरशिप करेगा टेक जायंट गूगल के साथ. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर गवर्नमेंट डाटा इंडियन इकोनॉमी शोड अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हाउ मच % इन FY21. FY21 में गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी कितने % कॉन्ट्रैक्शन पाई गई है? सो हेयर आर द ऑप्शन 7.3%, 7.7%, 7.9%, 8.0%. ओके. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज 7.3%. Amid coronavirus pandemic, India's gross domestic product (GDP) grew at 1.6% in January-March quarter, but witnessed contraction of 7.3% in the entire fiscal year, showed government data. Government data के according 7.3% हुआ है. ओके. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who won her second Asian boxing championship gold in 75 kg final in Dubai. किसने सेकेंड एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है 75 kg फाइनल दुबई में? सो हेयर आर द ऑप्शन दीक्षा अरोड़ा, निकिता सेन, महिरा वर्मा, पूजा रानी. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज पूजा रानी. Indian pugilist Pooja Rani repeated her gold medal winning performance at the Asian Elite Boxing Championship as she beats Mavluda Movlonova in the women's 75 kg final in Dubai. So now next question, who has been elected as the Asia Oceania representative at the recently concluded 2021 IAU Congress? So here the options are Nagraj Adiga, Mavluda Monkelam, Mukesh Sengar, Dinesh Dikshit. So here the correct answer is option A, Nagraj Adiga. India's Nagraj Adiga has been elected as the Asia Oceania representative at the recently concluded 2021 International Association of Ultra Runners Congress, at which the IAU Council elections were held. Okay. So आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.